Let's practice previous classes and after that we will study a new class. Okay? Are you ready? I'm ready. कैसे बोलोगे? I am ready. I am ready. I am ready. क्या चल रहा है? What's going on? What's going on? What's going on? आप क्या सोच रहे हो? What are you thinking? What are you thinking? What are you thinking? आप तो बड़े चालू आदमी हो. You are extremely cunning man. कैसे बोलोगे? You are extremely cunning man. Please speak aloud. Everybody. You are extremely cunning man. कैसे बोलोगे? You are extremely cunning man. 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 मैंने नोटिस किया था. I noticed. I noticed. मैंने नोटिस किया था कि I noticed that. I noticed that. आप आए थे. You came. You came. You came. और आप वापस चले गए. You go back. And you went back. And you went back. And you went back. And you went back. हालांकि हालांकि आप समझदार हो. Wise, sensible. Although you are sensible. Although you are sensible. Although you are sensible. मैं वाकिफ हूँ. मैं आपसे वाकिफ हूँ. I know you. I know you. I know you. मैं आपकी हरकतों से वाकिफ हूँ. I know your activities. I know your activities. I know your activities. लेकिन फिर भी but even लोग मौका देते हैं. People give chance. People give chance. People give chance. मैंने आपको मौका दिया था. I gave you a chance. कैसे बोलोगे? I gave you a chance. I gave you a chance. मैंने आपको बोलने का मौका दिया था. I gave you a chance to speak. Yes, come in. I gave you a chance to speak. I gave you a chance to speak. मैंने आपको कुछ दिया था. I gave you something. I gave you something. I gave you something. आपने लौटाया नहीं. You did not return. कैसे बोलोगे? You did not return it. You did not return it. You did not return it. झूठ बोलना पाप है. It is sin to lie बोलते हैं. It is sin to action means कोई भी काम करना पाप है. कोई भी काम करना पाप है. आप बोलते हो It is sin to action. कोई भी काम करना पाप है. It is sin to action आप यूज करते हो. का झूठ बोलना पाप है. कैसे बोलोगे? It is sin to lie. कैसे बोलने वाले हो? It is sin to lie. It is sin to lie. It is sin to lie. लड़ाई करना पाप है. It is sin to fight. It is sin to fight. It is sin to fight. आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए. You should understand. You should understand. नाम तो सुना ही होगा. You must have heard the name. Yes, you must have heard the name. कैसे बोलोगे? You must have heard the name. You must have heard the name. छोटू गंजा है. छोटू इज bald. छोटू इज bald. छोटू शरारती है. छोटू इज naughty. छोटू इज naughty. मैं आपसे कम नहीं हूँ. I am not. Yes, I am not less than you. कोई भी किसी से कम नहीं है. Yes, कहा कि मैं आपसे कम नहीं हूँ. I am not less than you. कैसे बोलोगे? I am not less than you. छोटू आपसे कम नहीं है. छोटू इज नॉट लेस देन यू. कैसे बोलोगे? छोटू इज नॉट लेस देन यू. छोटू इज नॉट लेस देन यू. आप छोटू से कम नहीं हो. You are not less than छोटू. कैसे बोलोगे?
You are, yes, you are not less than छोटू. You are not less than छोटू. उस पर विश्वास मत करो. Don't trust him. Don't trust him, don't believe on him, don't rely on him. Him or her. Rely. विश्वास के सेंस में यूज किया जाता है ये भी. Rely. कहा कि उस पे यकीन विश्वास मत करो. Don't rely on him. कैसे बोलोगे? Don't rely on him. 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 लड़ाई मत करो. Don't fight. Don't fight. झगड़ा मत करो. Don't quarrel. One more word is also there, brawl. Yes, quarrel and brawl का मतलब होता है झगड़ा करना. Don't brawl. कैसे बोलोगे? Don't brawl. Don't brawl. झगड़ा मोल मत लो. Don't take. Don't pick a quarrel. Quarrel and brawl झगड़ा करना होता है. कहा कि झगड़ा मोल मत लो. Don't pick a quarrel. कैसे बोलोगे? Don't pick a quarrel. Don't pick a quarrel. Don't pick a quarrel. Don't pick a quarrel. Don't pick a Don't pick a quarrel. quarrel. Don't pick a quarrel. सरसों हथेली पर नहीं उगाई जा सकती. How can you forget? Rome was not built in a day. Mr. Pradyuman. Rome was not built in a day means सरसों हथेली पर नहीं उगाए जा सकते. ऐसे मत यूज कर लेना. Mustard can't be grown at the palm. Don't use that. Okay? Yes, car Rome was not built in a day. कैसे बोलोगे? Rome was not built in a day. 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 मैं आपका विरोध करता हूं. I oppose you. Oppose से तो वर्ड बना है opposite. Oppose से तो वर्ड बना है opposite. Yeah, there are many other meanings. Yeah. I go against of you. I am not in favor of you. You can speak anything, but oppose का मतलब होता है विरोध करना. कहा कि मैं आपका विरोध करता हूँ. I oppose you. कैसे बोलोगे? I oppose you. I oppose you. मैं आपकी पोल खोल दूंगा. I will expose you. एक्सपोज पोल खोलना होता है. मैं आपकी पोल खोल दूंगा. कैसे बोलोगे? I will expose you. I will expose you. मैं आपको दीवार में चुनवा दूंगा. I will break you यूज करते हैं. कैसे बोलोगे? I'll break you. I'll break you. I'll break you. आपके पास क्या है? What do you have? What do you have? What do you have? आपकी पॉकेट में क्या है? What do you have in your pocket? What do you have in your pocket? Otherwise, what is there in your pocket? What is there in your pocket? कैसे बोलोगे? What is there in your pocket? 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 मेरी पॉकेट तो खाली है. My pocket is empty. My pocket is empty. Empty. My pocket is empty. कैसे बोलोगे? My pocket is empty. 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 चलो शुरू करते हैं. Let's start. Let's start. Let's begin. Let's begin. नई क्लास शुरू करते हैं. Let's start your class. मैं बिगिन तक लेके गया हूँ. रिवर्स आ सकते हो. Now don't pick a quarrel with anybody. Okay, let's study a new class. Before some time ago, one student asked, "Sir, teach this class again." So I want to teach this class again. The class is Abstain from. abstain from. Use of abstain from. Let's understand the meaning of this class is abstain from. हम यूज करते हैं किसी भी चीज से परहेज करना या किसी भी चीज से दूरी बनाना या फिर किसी भी चीज से बचना.
In this sense, we use a class abstain from, and here is a formula: worker time word abstain from action, so use action with ing, otherwise you can use non-action. Worker time word abstain from, if there is action, so you will use ing, otherwise you will use the non-action. Let's do it. Okay, some basic and common example. Suppose unfortunately you have stomach ache. You went to doctor and doctor asked this thing, tell me one thing, क्या खाया था आपने? कैसे पूछोगे? क्या खाया था आपने? कैसे पूछोगे? What did you take? क्या खाया था? कैसे पूछोगे? What did you take? You said I took potatoes. Yeah, doctor. Yeah, that's why you have stomach ache. आपको आलू खाने से परहेज करना चाहिए. एडवाइस दे रहे हो तो शुड लग जाएगा. You should abstain from taking. Yes, I knew you are there. Vibrate. Why are you late? Time batch, the timing of the batch has been changed. 10:30. Ask him what time did he get up. Ask him. Tell me. 10:30. He got up before half an hour ago. He got up 10:30. Doesn't your family say anything? Doesn't your family say anything that you should get up and all that? He came without bathing. No, you didn't take bath. It's perfect. Yeah, that's why. Yeah. Yes, he didn't take bath. I take bath. No, you didn't take bath. Yeah, you take bath, but you didn't take bath. ओके, कहा कि आपको आलू खाने से परहेज करना चाहिए. कैसे बोलोगे? यू शुड abstain फ्रॉम टेकिंग पोटैटोज. कैसे बोलने वाले हो? कैसे बोलोगे? यू शुड abstain फ्रॉम टेकिंग पोटैटोज. सपोज somebody take all the time chips, कुरकुरे, all that. टेढ़े है बट मेढ़े है. Yes, all the time chips and all that. कहा कि आपको स्पाइसी थिंग्स खाने से परहेज करना चाहिए. कैसे बोलोगे? You should abstain from taking spicy things. कैसे बोलोगे? You should abstain from taking spicy things. Yes, you know very well that Mr. Jisan got up 10:30. 10:30. Yeah, thank you. Yes, बाग में प्रेस आओ बोलता है. हाँ, thank you. He got up 10:30. Then I said, आपको लेट उठने से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए आपको. तो कैसे बोलने वाले हो? You should abstain from getting up late. If action you will use ing, getting up late. आपको लेट उठने से बचना चाहिए. कैसे बोलोगे? You should abstain from getting up late. कैसे बोलने वाले हो? You should abstain from getting up late. Yes, okay. You said, sir, I like fast food, but मैं फास्ट फूड खाने से परहेज करूंगा. I will. Well done. I will abstain from. Yes, खाने से तो कैसे बोलोगे? I will abstain from taking fast food. कैसे बोलने वाले हो? I will abstain from taking fast. I will abstain from taking fast food. कैसे बोलोगे? I will abstain from taking fast. आपने कहा सर गोलगप्पे खाने से परहेज करूंगा मैं. Abstain from Taking balls. taking water balls, गोलगप्पे. You know the reality, if you see how the Last night I did water balls. oh
But I want to tell you something. When they make the water balls at their home, you should see how they make. You should see how they make. They use the particular floor and they jump on. Yes, this is reality. They jump on. Yeah, some people make hygienic, but mostly they jump on and yeah, you like. Fine. It's okay. It's okay. I can understand. No, I don't worry. I will not tell anybody. राजी रहेगा, नहीं बताऊंगा किसी को आपने खाए थे. ओके, कहा कि मैं गोलगप्पे खाने से परहेज करूंगा. कैसे बोलोगे? I will abstain from taking water balls. कैसे बोलने वाले हो? I will abstain from taking water. Yes, आपने कहा कि सर मैं कहा कि मैं जैसे स्कूल जाने से परहेज किया करता था, दूरी बनाया करता था. I used to abstain from going to school. कैसे बोलने वाले हो? I used to abstain from going to school. कैसे बोलोगे? Okay. Suppose you have bad friend circle. Suppose you have bad friend circle. Now your family suggested you. You have bad friends. आपको अपने बुरी संगत से दूरी बनानी चाहिए. आपको बुरी संगत से दूरी बनानी चाहिए. तो कैसे बोलूँगा? You should abstain from bad company. आपने कहा कि मैं बुरी संगत से दूरी बना रहा हूँ. I am abstaining from bad company. बुरी संगत. कहा कि मैं बुरी संगत से दूरी बना रहा हूं. कैसे बोलने वाले हो? I am abstaining from bad company. कैसे बोलने वाले हो? Abstaining from bad company. कहा कि आजकल मैं मेरे दोस्तों से दूरी बना रहा हूं. Nowadays I am abstaining from my friends. कैसे बोलने वाले हो? Yes, किसी भी चीज से परहेज करना. You have seen some of the candidates, they use lots like so much oil on their hair. They apply too much oil, hair oil. Then you said, sir, I am trying. ज़्यादा ऑयल यूज़ हेयर ऑयल अप्लाई करने से मैं दूरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं कोशिश कर रहा हूँ तो आप क्या यूज़ करोगे? I am trying to abstain. I am trying to abstain from applying so much oil more than limit. Yeah. So कुछ भी मैं काम करने के लिए परहेज कर रहा हूँ. I am abstaining from something. Okay, you said sir, मैं तो समोसे खाने से परहेज करता हूँ. मैं समोसे खाने से परहेज करता हूँ. तो कैसे बोलोगे? I abstain. वर्कर एक्शन I know नहीं बोलते हो क्या? रूटीन की बात है, so abstain यूज करो. I abstain from taking resolves. कैसे बोलने वाले हो? या इस विंटर सीजन सो आई सेड दिस थिंग दैट आपको कोल्ड ड्रिंक पीने से परहेज करना चाहिए. कैसे बोलोगे? यू शुड अब्सटेन फ्रॉम टेकिंग कोल्ड ड्रिंक. कैसे बोलने वाले हो? फ्रॉम टेकिंग कोल्ड ड्रिंक. आपको आइसक्रीम खाने से परहेज करना चाहिए. यू शुड अब्सटेन फ्रॉम टेकिंग आइसक्रीम. लाइक दैट यू विल यूज. सो किसी भी काम से बचना या दूरी बनाना के सेंस में आप अब्सटेन फ्रॉम यूज करते हैं. मना करना है, सो यू विल यूज हियर नॉट. आई एम नॉट या आई शुड नॉट, यू शुड नॉट. किसी भी चीज़ के लिए आपको परहेज नहीं करना चाहिए. कहा कि आपको स्टडी से दूर नहीं जाना चाहिए, स्टडी से आपको बचना नहीं चाहिए. तो कैसे? कम इन. सो कहा कि आपको स्टडी से बचना नहीं चाहिए. तो कैसे बोलोगे? दूरी नहीं बनानी चाहिए. यू शुड नॉट abstain from studying. आपको स्टडी से परहेज नहीं करना चाहिए, दूरी नहीं बनानी चाहिए. कैसे बोलोगे? You should not abstain from studying. कैसे बोलने वाले हो? कैसे बोलोगे?
You should not abstain from studying. कहा कि आपको जल्दी आना चाहिए. इंग्लिश में कैसे बोलोगे? You should come early. कैसे बोलोगे? आपको लेट आने से दूरी बनानी चाहिए. You should abstain from coming late. कैसे बोलोगे? यस कहा कि आपको मोबाइल चलाने से दूरी बनानी चाहिए. यू शुड abstain फ्रॉम ऑपरेटिंग मोबाइल या यूजिंग मोबाइल, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते यू शुड abstain फ्रॉम मोबाइल्स. कहा कि आपको धुएं से दूर रहना चाहिए, abstain करना चाहिए. कैसे बोलोगे? यू शुड abstain फ्रॉम स्मोक. कैसे बोलोगे? यस सम पीपल फेस प्रॉब्लम्स लाइक देर आर 1 or 2 candidates when they ride bike. While riding bike they sleep. While riding bike they sleep. Then I said आपको बाइक चलाने से बचना चाहिए. तो कैसे बोलूंगा? You should abstain from riding bike. There are 2 candidates in my village. While riding bike they sleep. While riding bike they sleep. They say yeah, जबकि I take nap. So while riding they take nap. Wow. How is riding? How is riding? Riding? Yes. No, they sleep. They don't know where bike is going. They don't know. Once what happened there? I think I should share or not. No, I should not share. Otherwise, people will listen. People will listen and they will say that he is talking about us. So, yeah, I will tell you separately. Yeah, there was an incident. I will tell about it. Fine. Use this class. You should tell us. Yeah, I will tell you later. Don't worry. No, I will tell you. That time. Yeah, if you come late, so okay. So here is a class of abstain from, that is used किसी भी चीज से दूरी बनाना, बचना और परहेज करने के सेंस में आप यूज करने वाले हो. ओके, सो फॉर टुडे इट इज इनफ. अस्सलाम वालेकुम.